लेट हो 9:30 का टाइम दिया था मैंने भाई. गुड इवनिंग. हेलो. लेट्स डू इट. फ्री वेबिनार. Hello, Bhuvan. Hello, Anshul plays. Yes, finally. Voice not clear. Voice not clear. Guys, if you can hear my voice clearly, please give me a thumbs up. Okay, yeah, wait. Okay, guys, let's do it. Low sound. Low sound. Gain. Can you hear it? Is it clear now? Hello. Okay, let me just see if everything is working fine. Okay, guys, I will not take questions immediately.
पहला लेके चलता हूँ. First I'll talk about things directly. Okay, we have around 25 people. Cool. 1 second, let me just see if I can capture the window. Alright, done. We have it. Okay guys, this is what I am going to do today. एक 1.5 घंटे का session है. And this entire session we'll talk about how to get into the Indian gaming industry. There's a clear roadmap. I've done the first cohort. I think some of the people from the cohort are also there in this group right now, in this live stream. But the whole point of doing this is because we are also starting something around this, where we would be able to do some kind of course which can help people. So obviously वो 100% फ्री नहीं है, बट ऐसे वेबिनार्स जो है, जो 1-1.5-2 घंटे के वेबिनार्स है जो मेरे यूट्यूब पे आ रहे हैं, वो सारे फ्री है. सो 1 second. सो वो सारे सेशंस फ्री है जो अभी मैं कर रहा हूँ, बिकॉज द होल कोहोर्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट कोहोर्ट इज around 1 week's cohort that we are doing. But before that, I'll just take you through this entire thing. Right, 1 second. Okay, let's go. Let's start. बहुत ज़्यादा content है, so I'll just keep it very short, very quick. Hi guys, everybody who is here. मैं पढ़ रहा हूँ चैट्स बीच बीच में, बट आई टेक द क्वेश्चंस एट द एंड. तो ये सेशन को इस तरीके से करने हैं कि 1-1.25 घंटे तक आई विल जस्ट टॉक अबाउट ways how do you get there, and then बाद में we will do a Q&A. We'll do the Q&A from this chat itself. ठीक है. All right, let's start. So Indian gaming industry roadmap, and good thing and something very new is that there's a banner of underdogs on top of it. There's something that is coming soon, so I'll just straight away jump into it. So for people who don't know me, I've been doing games. I've been making games for last 17 years. First 4 years for other people, and then right now around 14-15 years building underdogs as a sustainable business. But uske pehle I used to work at Disney Games Store in Hangama, and made more than 100 games for these people. And then from 2011 we started underdogs. So I'm the founder and I'm the game director, currently working on something very cool, which is this. If you guys know, Mukti is a first person story exploration game, but the beauty of the game is that it has live action sequences into it while you go through that entire journey of exploration, solving the mystery and all of that. We have won epic mega grant before this, और उसके बाद epic mega grant के वजह से we were able to make a vertical slice, and then we pitched it to Sony, and we're doing like we're building this game in collaboration with Sony under Sony India Hero project. So we are one of the few selected people out of 400 applications nationwide. So we got selected from that, and then we are doing this, right? So very soon you'll be hearing a lot of things about Mukti. हम लोग अभी एक वो phase में हैं जहाँ पे we are
into a milestone which takes a lot of our dedication, time, efforts, everything around it. So we're doing that, and once we finish that, there will be flooding of news, of things, of artwork, of videos जो आपको देखने मिलेंगे मुक्ति के ऊपर. Alright, the journey, again, LinkedIn पे, Instagram पे और YouTube पे content बना रहा हूँ मैं. If people are not aware of this, if you have any questions regarding this game development industry, just go and watch the YouTube channel. There are more than 800 videos right now. ये पुराने screenshots हैं, but 800 से ज़्यादा videos है इसके ऊपर. आप जो topic सोचोगे उसके ऊपर video already बना चुका हूँ मैं. So just go there and check out. Okay, कुछ questions होते हैं. अभी I'll start with the basics जो लोग face करते हैं, ठीक है. Right now everybody who is interested in games, in gaming industry में आना है, लेकिन पता नहीं है क्या करना है. I mean, बहुत सारी चीज़ें जो करनी है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिसमें लोग फंसे पड़े हैं. इंडस्ट्री में आने के लिए एक सीधा रोड मैप है, पर होता ये है कि इतने सारे क्वेश्चंस है लोगों के दिमाग में कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसको टैकल कैसे करे, क्या 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 डोमेन होता है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या पाथ लेना चाहिए, किसी को कुछ नहीं मालूम. सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आई वांट टू गो इन गेमिंग बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सारे लोगों में, जो मैं अपने यूट्यूब लिंक्डइन से बहुत लोगों से बातें करता हूँ. दिस इज़ वन थिंग दैट पीपल रियली मैस अप विथ. मतलब किसी को गेम आर्ट आता है लेकिन गेम डिज़ाइन में फंसा पड़ा है, किसी को गेम डिज़ाइन करना है लेकिन आर्ट का कोर्स किया जा रहा है, 3D मैक्स में आया बिना वजह. देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग इट. Then another question is, my parents are concerned that gaming has no future in India. मैं कुछ नंबर्स बताऊंगा इसी प्रेजेंटेशन में, और ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, तो हो सकता है आप लोगों ने कभी देखी नहीं हो ये चीज़. तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, कंज्यूम कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ सेशन दैट आई एम डूइंग वेरी रेयरली, क्योंकि लाइव पे मैं सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ अब तक. So this is something that you need to know. Okay, so my parents are concerned that gaming has no future in India. एक स्लाइड में सारे नंबर्स बताऊंगा. वो नंबर्स भी अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलोगे how big this industry is and how where we are exactly going, it's big. I did a course but not finding any job. There are ways, there are things, there are problems, there are mistakes that people are doing, और वो mistakes को हम लोग कवर करते हैं. We know the exact kind of mistakes that people are doing, जिसके वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही है इंडस्ट्री में अभी तक. I want to become a game programmer but no coding skills. Again, you need to figure out कि तुम्हारा कोर क्या है. What skills actually matter to become a professional game developer? अब ये क्वेश्चन इतना ब्रॉड है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि गेम डेवलपर मतलब कोडिंग करना. गेम डेवलपर एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं. पहले वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारी स्किल सेट किस में है, तुम्हें इंटरेस्ट किस में है, और फिर तुम्हें उसके आगे जाना है. डू आई रियली नीड अ डिग्री टू एंटर गेम डेवलपमेंट? दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है. व्हाट शुड आई फोकस ऑन फर्स्ट इफ आई वांट अ करियर इन गेम्स? हाउ डू आई बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट स्टूडियोज विल एक्चुअली नोटिस? ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये एक सेशन में कवर नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए मैंने बहुत टॉप लाइन जितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो मैं ये सेशन में करने वाला हूँ. पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत डिटेल्ड है, ये बहुत लेयर्स है इसके पीछे, और इंडिविजुअली इसके ऊपर हर एक को एफर्ट डालना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई to focus more on individual talents, to focus more and give our time to people who really want to get into the game development. That is why we are doing this comprehensive cohorts, जो cohort के बारे में मैं आपको बाद में presentation के end तक बता दूंगा. So this is one thing, I mean, ये पता नहीं कितने लोगों को पता है, Lao Tzu, ये is a Chinese writer, literature, all of that. So
सो इसने एक चीज़ बोली थी, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है कि आप किसी को कोई एक चीज़ में फंसा है ना, तो उसे वो चीज़ का सोल्यूशन मत दो, उस चीज़ को कैसे टैकल करना है ना, उसको उसका एक फ्रेमवर्क दो. The whole point of what he's trying to say is there are systems, there are frameworks जो आप अपने अपने ऊपर लागू करोगे तो you can solve any problem. So you can tackle all of your problems with those systems, and every system is defined for one particular goal, right? So that's what we're gonna talk about, the framework. One second, guys. Okay, let's move it. How to choose a game engine? Okay, cool. Indian gaming industry. This is the snapshot. तो आप लोगों को अगर पता नहीं होगा, I am very sure half of the people who are watching this have no clue about how many gaming companies in India exist. इंडिया में कितनी सारी गेमिंग कंपनीज एग्जिस्ट भी करती है ये भी नहीं पता लोगों को. अगर मैं 5 नाम बोलूँगा किसी को तो वो भी नहीं ले पाएंगे, इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में. दिस इज़ द करंट स्नैपशॉट ऑफ द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री. द मार्केट साइज, ये फिर भी ये एक महीने पहले किया हुआ रिसर्च है. देर इज़ अनदर रिसर्च दैट हैज़ केम आउट. 7.5 बिलियन मार्केट साइज है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का. 7.5 बिलियन. 600 मिलियन से ज़्यादा गेमर्स हैं इंडिया में. 700 से ज़्यादा गेमिंग स्टूडियोज़ हैं. ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये एक जर्नी है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का जो 1990 से स्टार्ट हुआ है. जो फर्स्ट जन कंपनीज थी 1996, 97, 98, 99 में, कुछ गेमिंग कंपनीज के नाम आपको पता होंगे. ध्रुवा इंटरैक्टिव जो राजेश राव ने स्टार्ट की थी, नीतीश मित्तर सेन ने नज़ारा स्टार्ट की, विशाल गोंडल ने इंडिया गेम्स स्टार्ट की, ये सारी लक्ष्य डिजिटल जो मानवेंद्र शुक्ल और लोगों ने स्टार्ट की. ये कंपनीज पायनियरिंग कंपनीज हैं इंडिया की. आज भी वो कंपनीज उतनी ही बड़ी हैं. नज़ारा इनफैक्ट हैज़ गॉन टू IPO, राइट. तो ये फर्स्ट जन कंपनीज है जो सिम्बियन फ़ोन्स पे काम करती थी. सिम्बियन फ़ोन यानी वो कीपैड वाले फ़ोन्स होते थे जिसमें आप बटन दबा के गेम्स खेलते थे. उस पे गेम्स बनते थे जावा और ब्रो पे. जब हम 2005 के यहाँ पे पहुँचे ना, 2003-2005, तभी वेब बेस्ड गेम्स ज़्यादा बढ़ गए थे. सो ब्राउज़र पे लोग गेम्स खेलते थे. इसीलिए आपने देखा होगा ज़पैक, मिनी क्लिप, आर्मर गेम्स, ए गेम्स, ये जो वेबसाइट्स थे, ये गेम्स टू विन, गैंग ऑफ गेमर्स, ऑल ऑफ दोज गेम कंपनीज लिटरली थ्राइव्ड ऑन दोज गेम्स. फिर 2010 में स्मार्टफोन आए, फिर ऐप स्टोर्स आए उसकी वजह से, एंड देन द एंटायर गेम चेंज टू दिस मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री ऑन स्मार्टफोन्स. तो 2011 से आई थिंक इंडिया में गेम्स बनना चालू हुए स्मार्टफोन्स पे. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टूडियोज़ इन इंडिया जिन्होंने ये मोबाइल गेम्स पे काम चालू किया. वी इनफैक्ट वर्कड विद गेम्स टू विन टू मेक अ गेम कॉल्ड पार्किंग फ्रेंजी विच इन 2013, जो इनफैक्ट गेम्स टू विन के लिए भी आई थिंक सेकेंड या थर्ड मोबाइल गेम था उनका खुद का. एंड इट डिड एब्सोल्युटली अमेजिंग. हम 4 लोगों ने मिलके बनाया था वो 2013 में, बट दैट वाज अ बिग गेम. फिर 2014 से लेके 2018 तक, इफ़ यू नो, इंडस्ट्री थोड़ी स्ट्रीमिंग के एंगल पर भी गई, जहाँ पे अ लॉट ऑफ स्ट्रीमर्स स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स ऑन गेम्स लाइक GTA, या PUBG,
और इसके वजह से ऑडियंस जो बूम हुआ फॉर एज अ गेमर ऑडियंस, जिन्हें गेम्स खेलना, गेम्स देखना बहुत पसंद था. एंड फिर कोविड आते आते यू नो हाउ हाइब्रिड एंड हाइपर कैजुअल गेम्स वो सारे आने चालू हुए, हाइब्रिड हाइपर कैजुअल गेम्स, एंड देन one tap games. But COVID was all about survival, so every gaming studio in the world survived that entire period, right? So that is what happened in COVID. But after that 2020 से लेके 2021-22, there was an absolute boom of um, Steam games, of PC games, and today as we speak मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 150 पीसी गेम्स बन रहे हैं फिलहाल इंडिया में एज वी स्पीक. एंड अगले 2 साल में ये इतने ज़्यादा बूम करेंगे पीसी गेम्स, कंसोल गेम्स इंडिया से निकल के, दैट द एंटायर graph of it will change. And all of these numbers obviously will go high. Cool. So let us talk about the problem. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मार्केट साइज इतना बड़ा है, इतने गेमर्स है, इतने गेमिंग स्टूडियोज है, तो लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही गेमिंग इंडस्ट्री में? Why are people suffering? If the opportunity is so big, why are you stuck? There are 3 main problems. Number 1 is college gap. इंडिया में जैसे आप लोगों को पता है कॉलेजेस नहीं है ज़्यादा. यानी अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में मैं एंटर करता हूँ और मैं डॉक्टर बनता हूँ. अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, इंजीनियर बन के बाहर निकलता हूँ. गेम डेवलपर बनने के लिए देर इज नथिंग लाइक दिस. I mean, now you can see some institutes, some colleges attempting doing way better than what we had earlier, but there is still a big gap. There's a big college gap. इस कॉलेज गैप में एक और डिसएडवांटेज भी ये है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर भी है. उन लोगों ने तबाही मचा दी है बिकॉज दे आर selling something very wrong to the kids, to the students, जिनसे 5-10 लाख रुपए ले रहे हैं लेकिन उन्हें बेच कुछ और रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो अपने कोर्सेज को नाम देते हैं गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और डिप्लोमा इन गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, और उसमें बच्चे 3D मैक्स और माया सीख रहे हैं. दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट. गेम डिज़ाइन का 3D मैक्स और माया से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन है ही नहीं. डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का 3D मैक्स माया से कोई कनेक्शन नहीं. सो नंबर 1 प्रॉब्लम इज कॉलेज गैप. नंबर 2 इज रॉन्ग ट्रैक सिंड्रोम. ये एक बहुत ही फनी चीज़ है बिकॉज आई नो पीपल जिनको पहला प्रॉब्लम कि उनको पता नहीं है ट्रैक्स कितने हैं, डोमेन्स कितने हैं. दूसरा प्रॉब्लम, अगर पता भी है तो उन्हें अपना स्किल सेट मैच करने नहीं आ रहा है उसके साथ कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या इंटरेस्ट है और मैं किस में जाना चाहता हूँ. कुछ लोग उठ के बोलेंगे मैं गेम्स अच्छे सोच पाता हूँ, क्या मैं आई एम अ गेम, मुझे एनवायरनमेंट आर्ट बनाना है. रॉन्ग. कुछ लोग ऐसे जो बोलते हैं कि मैं आई एम अ गेम डिज़ाइनर, ठीक है, एंड उसके पोर्टफोलियो में लिखा हुआ, उसके पोर्टफोलियो में होता है पूरा एनवायरनमेंट आर्ट. आर्टिस्ट और गेम डिज़ाइनर बहुत अलग चीज़ें हैं, दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का कि लोगों को पता नहीं है डोमेन्स क्या है, ट्रैक्स क्या है, इसीलिए गलत ट्रैक में फंसे हैं. कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको गेम डेवलपर बनना है लेकिन उन्हें सब करना है.
उन्हें गेम आर्ट भी करना है, गेम डिज़ाइन भी करना है, गेम प्रोग्रामिंग भी करना है। वो लोग अपने आप को इंडी सोच रहे हैं, पर उससे तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाला है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। नंबर 2 कॉलेज गैप के साथ, नंबर 2 इज रॉन्ग ट्रैक सिंड्रोम, एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज नोबडी इज टेलिंग यू द रोड मैप कि एग्जैक्टली क्या करना है तुमको। सो नोबडी इज रियली टेलिंग यू हाउ टू रियली गेट इनटू दैट इंडस्ट्री। क्या ये 5, 6, 10 स्टेप्स हैं जो तुम लोगे तो तुम इंडस्ट्री में आ पाओगे। दैट इज वाई लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, जहाँ पे आई कैन टेक यू थ्रू दैट एंटायर रोड मैप। ठीक है, ऑलराइट। पहले एक चीज के बारे में, बेसिक चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि गेम्स बनते कैसे हैं। ठीक है, आई आंसर द क्वेश्चंस, आई आंसर, हम Q&A स्टार्ट करेंगे तभी हम चैट से सारे क्वेश्चंस जो लोग उस वक्त पूछेंगे वो क्वेश्चंस को उठा लेंगे। ठीक है, बट पहले ये प्रेजेंटेशन सुन लो, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो शायद आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि गेम्स कैसे बनते हैं। गेम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्री प्रोडक्शन और दूसरा होता है प्रोडक्शन। इसमें पोस्ट प्रोडक्शन नाम की चीज नहीं होती, जैसे मूवीज में होती है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। गेम्स में वैसी चीजें नहीं होती। गेम्स में होता है प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में होता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, आप सोचते हो गेम को, आप आर्ट के बारे में मॉकअप्स बनाते हो, कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हो, कैरेक्टर के स्केचेस बनाते हो, एनवायरनमेंट की विजुअल्स के विजुअल लैंग्वेज जो होती है गेम की वो डिफाइन करते हो। प्री प्रोडक्शन में आपकी गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट विच इज़ GDD, विच इज़ द होली डॉक्यूमेंट फॉर अ गेम, आप वो बनाते हो। तो प्री प्रोडक्शन में एक्चुअली इंजन खोला भी नहीं जाता, इट इज़ मोर ऑफ आइडिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, सो दैट यू आर वेरी क्लियर कि आपका गेम क्या है। एवरी गेम नीड्स टू फॉलो अ प्री प्रोडक्शन प्रोसेस, वरना आप एक लूप में जाओगे जहाँ से आप गेम ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। यू जस्ट गो इनटू दैट मेक, ये करते, ऐसा नहीं होता। गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में अगर गेम के 10 सिस्टम्स है तो वो गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में ऐड करने होते हैं और उसको उसके साथ यू जस्ट मेक दैट गेम। Then the second part is the production, which is where the entire production happens of the game. तो जो गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जो टेक्निकल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये दोनों भी जो चीज़ें हैं वो टीम्स को दी जाती है, आर्ट को, कोडिंग को, आर्ट टीम और प्रोग्रामिंग टीम, एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग द गेम। आर्ट स्टार्ट विद बेसिक आर्ट एंड देन प्रोग्रामर स्टार्ट्स विद प्रोटोटाइपिंग, और ये आइटरेशन चलते जाता है। फिर एक टाइम पे टेस्टर्स आ जाते हैं बीच में, एंड देन द एंटायर लूप कंटिन्यूज टिल वी गेट टू सर्टन स्टेजेस। अब वो स्टेजेस क्या है? सबसे पहला स्टेज होता है फर्स्ट प्लेएबल स्टेज। तो जैसा ही गेम का GDD TDD खत्म होता है, तो यू गो इनटू द प्रोडक्शन एंड आर्ट एंड कोडर्स स्टार्ट मेकिंग द फर्स्ट प्लेएबल ऑफ द गेम, विच मीन्स वो किसी के हाथ में जाएगा और वो खेल पाएंगे। इतने लेवल तक का वो गेम का एक सिस्टम बनना रेडी है, हो सकता है। दैट्स द फर्स्ट प्लेएबल। देन फ्रॉम फर्स्ट प्लेएबल यू गो टू अल्फा। इसके बीच में भी स्टेजेस हो सकते हैं, जैसे प्री अल्फा हो, बट अल्फा इज वेयर योर एंटायर गेम शुड बी रेडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट Z। ऑल्दो उसके अंदर आप बहुत सारे प्लेस होल्डर्स डाल सकते हो, यानी समझ लो आप एक पजल है तो उस पजल का फाइनल आर्ट वर्क की ज़रूरत नहीं है, आप वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स डाल सकते हो वहाँ पे, बट वो पूरा फंक्शनैलिटी होना ज़रूरी है। दैट्स द एंटायर अल्फा। एंड इन अल्फा you also need to be very sure that your game is shippable. आप इतने लेवल तक अपने गेम को बना दो कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये गेम शिप हो सकता है। फ्रॉम अल्फा टू बीटा इज वेयर यू पॉलिश एवरीथिंग, मतलब आपके गेम का आर्ट वार्ट जो भी बचा था पेंडिंग, सब कुछ अंदर जाना चाहिए। बीटा के बाद आपके गेम में कोई भी आर्टवर्क नहीं जा सकता, बिकॉज बीटा के बाद गोल्ड का जो फेज होता है, बीटा से गोल्ड तक का जो फेज होता है, उसमें सिर्फ
QA होता है, उसमें टेस्टिंग होती है, TRC चेक्स, अगर आप कंसोल पे गेम बना रहे हो तो TRC चेक्स होते हैं. ये लूप में चलते रहता है जब तक यू गेट अ बिल्ड विच इज़ 100% बग फ्री. उस वक्त आप बोल सकते हो कि आपका गोल्ड स्टैंडर्ड रीच हुआ है, आपने गेम क्लोज कर दिया है. गोल्ड क्लोज होने के बाद देन द मार्केटिंग टीम डिसाइड्स कि रिलीज कब करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, ऑल ऑफ दैट. बट दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन गेम. ऑल राइट, प्राइमरी डोमेन्स कितने हैं? 4 प्राइमरी डोमेन्स है. जो मैं बोल रहा था कि लोगों को ट्रैक सिंड्रोम, रॉन्ग ट्रैक सिंड्रोम है, वो ये है कि उन्हें इन चारों ट्रैक्स में से कौन से ट्रैक में उनको करियर करना है ये उन्हें पता ही नहीं है. ये प्रॉब्लम है. तो प्राइमरी डोमेन कौन कौन से समझ लेते हैं. नंबर 1 इज गेम डिज़ाइन, जहाँ पे गेम डिज़ाइनर्स गेम को लिखते हैं. यू राइट द गेम, यू थिंक ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द गेम, उसकी बैलेंसिंग, उसका कैरेक्टर, बैकग्राउंड, नरेशन, सब कुछ, इकोनॉमी अगर है, विन लूज सिनारियोज, लाइव्स, जो भी है एवरीथिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी, गेम के बारे में सब कुछ गेम डिज़ाइनर लिखते हैं. Once the game designer writes the GDD and the game goes into the production, then the entire job of a game designer becomes like a game producer or a tracking or a management guy who makes sure that the game art team and game programming team is actually making the game as expected. So there is a lot of management that happens in between by a game designer. और इसीलिए गेम डिज़ाइनर जैसे जैसे अपने करियर में आगे जाता है, वो सीनियर गेम डिज़ाइनर, असिस्टेंट गेम प्रोड्यूसर, सीनियर गेम प्रोड्यूसर, पब्लिशिंग हेड, ये लेवल पे आगे ग्रो होते जाता है. नंबर 2 इज गेम आर्ट, विच मीन्स आप गेम के आर्ट पे काम करते हो. जितने भी आर्ट एसेट्स आपको दिखते हैं गेम में, वो गेम आर्टिस्ट बनाता है. वो 3D हो, 2D हो, एनवायरनमेंट हो. हम एक्चुअली म्यूजिक साउंड को भी आर्ट ही बोलते हैं, ठीक है. बट लेट्स जस्ट नाउ टॉक अबाउट द गेम आर्ट, विच इज ड्राइंग्स एंड 3D मॉडल्स, एनिमेशन, रिगिंग, ऑल ऑफ दैट. तो गेम आर्टिस्ट का काम गेम के एसेट्स बनाना होता है. अब ये बंदे, गेम डिजाइनर ने जो गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट लिखा है उसको देख देख के सारी चीजें बनाते हैं. गेम प्रोग्रामर जो होता है वो बेसिकली कोड करता है. is a programmer who codes the entire game, takes the game design document, reads कि exactly player ने इस moment पे क्या करना चाहिए, वो यहाँ जाएगा, वहाँ पे एक jump scare आएगा, ये आएगा, वो आएगा, एक enemy आएगा, shooting, इतने bullets, whatever. He takes the artwork from the artist, takes the design from the game designer in a GDD, and then starts coding it. Game tester is someone who tests the game, जो continuously plays the game to figure out the bugs and the issues in the game. That's it. That's a simple thing. But game designer का job जितना easy लगता है उतना है नहीं. आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा. These are additional domains. अब ये domains जो है ना, ये ऐसे domains है जिसमें आप हो सकता है डायरेक्टली एंट्री ना कर पाओ. Like for example, you can't enter game publishing without having an experience in the primary domains. मतलब गेम पब्लिशिंग पे लोग कैसे पहुंचते हैं? या तो गेम डिज़ाइनर ग्रो हो के पब्लिशर बनता है, या तो कोई ऐसे फ्रेशर लेवल पे ऐसे लोग आते हैं जो जिन्हें ज़्यादा आई मीन अगेन पब्लिशिंग नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग. But then if it's a management level thing which has to be done within publishing, then they can join. Otherwise you need that gaming background. But ऐसे additional domains जैसे music है, complete music for the game, marketing है, publishing है, streaming है. अभी ये streaming, casters, ये सारे नए profiles भी add हो चुके हैं. Then there is journalism again, which is very bad in India right now, but ठीक है, journalism is there.
एनालिटिक्स है एंड रेवेन्यू है. ठीक है, एनालिटिक्स एंड रेवेन्यू में क्या होता है, मैं एक चीज सिर्फ क्विकली बता देता हूँ. मोबाइल गेम्स जो आपको दिखते हैं, जो आप न्यूज पढ़ते हो कि ओ ये गेम ने $2 बिलियन बनाए लाइफ टाइम रेवेन्यू, वो ऐसे ही नहीं बनते. उसके लिए पूरी टीम होती है जो एनालिटिक्स को हर मिनट ट्रैक करती है कि लोग कहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, कौन सी लेवल खेल रहे हैं, कहाँ पे उन्हें क्या फीड करना चाहिए. ये पूरे एनालिटिक्स की टीम बैठी होती है जो ये सब देखती है. देन दे ऑल्सो एनालाइज अलोंग विद द रेवेन्यू, दे ऑल्सो एनालाइज कि कंसोल पे क्या हो रहा है, गूगल कंसोल या ऐप स्टोर पे क्या हो रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग. उसके सीपीआईज, अगर वो एक एड कैंपेन रन हो रहा है नॉन स्टॉप, और ये जो जो गेम्स मिलियंस में कमाते हैं वो मिलियंस में स्पेंड भी करते हैं. ये कोई रैंडम ट्रिक नहीं है. मोबाइल गेम इज टफ बिकॉज डिस्कवरेबिलिटी के लिए पीपल, गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, ये ऐसी लक वाली कोई चीज़ नहीं है. तो एनालिटिक्स एंड रेवेन्यू इज बेसिकली अगेन दीज पीपल फोकस मोर ऑन द मोनेटाइजेशन, कि कहाँ पे वीडियो ऐड आनी चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, किसका प्राइस पॉइंट कितना कम होना चाहिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. अब like I told you, without having knowledge of the primary domain, you can't do all of these things. Okay, quickly मैं चारों जो प्राइमरी डोमेन्स है ना, उसके लिए बेस लेवल क्या लगता है आपको और वो क्या करते हैं इंडस्ट्री में, वो बस बता देता हूँ. तो गेम डिज़ाइनर करता क्या है, विजुअलाइज करता है गेम को, गेम के आइडियाज़ लिखता है, डिज़ाइन करता है लेवल्स को, डॉक्यूमेंटेशन करता है. और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो एक गेम डिज़ाइनर में होनी चाहिए वो है गुड कम्युनिकेशन. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप अपने गेम का आइडिया डॉक्यूमेंट में लिख तो रहे हो, लेकिन क्या वो आप सामने वाले को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो. तो ये जो है ना, ये स्किल है. And this is one skill that is required for a game designer, along with the whole all these technical skills. Qualification wise, I और ये मेरे opinions है, don't hold me against it. These are my opinions because I know how the industry works. मुझे ऐसा लगता है कि qualification की कोई ज़रूरत नहीं है, at least game designer के लिए. Any graduate can do it. Plus point is if you have good communication skills, you can speak well in English, वो मैटर करेगा आपकी जो, because you write games, right? You write games and you are expected to write well. इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास आपने कोई इंस्टीट्यूट से बैचलर्स या मास्टर किया है गेम डिज़ाइन में, then that is a plus point, because फ्रेशर लेवल पे जब आप जाओगे तो एवरीबडी विल एक्सपेक्ट दैट यू एटलीस्ट नो द फंडामेंटल्स ऑफ गेम डिज़ाइन. जैसे गेम प्ले क्या होता है, कोर लूप क्या होता है, गेम मैकेनिक्स क्या होता है, FTUE क्या होता है, ये सारी चीज़ें गेम डिज़ाइन के लिंगोज हैं. या आप अगर बोल दोगे सामने वाले के सामने, तो देन दे नो दैट दीज आर his knowledge about these fundamentals is good. At least he knows those things. One of the confusion जो लोगों को है, वो मैं अभी एक चीज़ टूल्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ. लोगों को ऐसा लगता है गेम डिज़ाइनर का काम अनरियल में है, यूनिटी में है, 3D मैक्स में है, माया में है. ऐसा कुछ भी नहीं है. गेम डिज़ाइनर जो कोर गेम डिज़ाइनर होता है ना, उसका काम फनी है लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट्स, इसी पे है. ज़्यादातर काम आपका इन्हीं चीज़ों पे है. दैट इज इट. वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट. और मॉक्स के लिए, यानी मैंने कुछ सोचा है तो उसे मैं विजुअली रिप्रेजेंट कैसे करूं, तो लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं अपनी स्क्रिबलिंग करके कि ओके मैं ये सोच रहा था, मेरी लेवल मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा हूँ. एंड देन देयर इज मीरो विच इज़ अ ग्रेट टूल फॉर ट्रैकिंग, फॉर एवरीथिंग फॉर अ गेम डिज़ाइनर. वो चेकआउट कर लो एक बार. मीरो इज़ अ ग्रेट टूल. One of the things that you should do as a game designer, if you are looking to become a game designer, is consume a lot of content. जैसे गेम्स खेलोगे नहीं तो गेम्स बना नहीं पाओगे. गेम डिज़ाइनर की one of the quality is observation. He needs to know a lot of things. You need to read
a lot of things. You need to watch, say, movies, content, play games. More you do that, more you will polish your skills on, you know, because when you absorb those things, you would be able to execute more of those ideas into your games. एक छोटा एग्जांपल बता देता हूँ. On the first day of my job as a game designer in India Games, my game producer gave me a 500 pager Greek mythology book to read. मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ ये बुक, but then I realized that it is so important for a game designer to read a lot, because पता नहीं आप होंगे एथिस्ट, पर आप गेम डिजाइनर हो और आपके मैनेजमेंट आपको आके बोल दे कि चलो महाभारत रामायण पे गेम बनाना है, what the hell will you do? You need to know stories. You should be a good storyteller. Guys, we have 52 people watching. Great. Please hit the like button once. एक बार सिर्फ like को click कर दो, so that it travels more to more people. Please, because this is valuable information, free है. Just try and give it to more people. So please hit that like button once. Okay, let's move on to game art. Game art, जैसे मैंने कहा, art assets बनाते हैं, 2D characters, 3D models, texturing, rigging. Okay, one more thing in game design is that there is level design also, जिसमें Unreal, Unity में काम होता है game designer का. But India में we are actually a little behind that stage, जहाँ पे there are these so many companies who are actually allowing game designers to sit on Unreal engines and design levels, because उस तरीके के मैसिव गेम्स नहीं बन रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं. बट दैट्स व्हाट. ओके, गेम आर्ट, लाइक आई सेड, you work on tools like Maya, 3D Max, Photoshop. Substance Painter एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप टेक्सचरिंग करते हो, उसे आप यूज करके 3D मॉडल्स पे टेक्सचरिंग करते हो. एंड दैट्स अगेन, ब्लेंडर इज अ ग्रेट टूल. सो आर्टिस्ट का काम होता है विजुअल जितनी भी चीज़ें आप गेम में देख रहे हो उसको बनाना. इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वाइज ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है. पर अगर आपको जेन्युइनली ग्रेजुएशन करना ही है तो आप फाइन आर्ट्स में करो. आप अपने बेस लेवल के जो स्किल्स है ना उसी को पॉलिश कर लोगे ना, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता. प्लस इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट्स इन आर्ट टूल्स, जो यही है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के आप नाम लेते हो, आर्ट के लिए ये इंस्टीट्यूट्स अच्छे ही है. गेम डिज़ाइन के लिए आई स्टिल डाउट, आर्ट के लिए बहुत अच्छे हैं. सो दैट्स द गेम आर्ट्स आर्टिस्ट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम प्रोग्रामर्स जॉब प्रोफाइल. बेसिकली गेम प्रोग्रामर कोड करता है गेम को, आर्किटेक्चर बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, टेक्स आर्ट फ्रॉम आर्टिस्ट एंड इनकॉर्पोरेट्स इन द गेम. जब भी कोई बग्स आते हैं, देयर जॉब इज टू रिजॉल्व दोज बग्स एंड एंटायरली मैनेज द टेक्निकल सपोर्ट फॉर द गेम. दैट इज इट, वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन. क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पे जेन्युइनली मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ भी, स्टिल दे बिकेम गुड इन गेम प्रोग्रामिंग. सो अगेन मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपको पता है लॉन्ग टर्म में आप प्रोग्रामर ही रहने वाले हो, आपको उसी में इंटरेस्ट है, आई थिंक यू शुड चूज समथिंग लाइक अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, साइंस, कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जहाँ पे ये सब चीज़ें, बिकॉज आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है गेम प्रोग्रामिंग को लेके, विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, C#, C++, ये पॉलिश हो जाएंगे बेस लेवल पे, तो वो शायद आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा अगर आपने वो चूज़ की होगी अपनी स्ट्रीम. Plus, if you have any certifications, any small courses on UDEMY, Coursera, Unity Learn or anything,
जिसमें आप C++, C# सीख चुके हो, दैट इज ग्रेट फॉर यू. टूल्स अगेन अनरियल, यूनिटी, गेम मेकर, गोडो और ऐसे 10,000 इंजिन है. आप गेम किसी में भी बना सकते हो, पर अगर आप इंडिया फोकस कर रहे हो तो यूनिटी is the widely used engine in India when it comes to companies. Unreal is a little less, but again it's growing very fast. और Godot जो है ना, lot of solo developers are using Godot. So if you are looking at an angle of an indie, you just go to that Godot. Godot is a good tool. Alright, the last one is game testing. गेम टेस्टर का काम होता है गेम को टेस्ट करना टू सी इफ देयर आर एनी इश्यूज इन द गेम, एंड यू नो you find the issues, you play the game, you find the issues, and then you report the bugs to the team so that they can fix those issues. अब इसमें ना एक चीज़ मुझे हमेशा हाईलाइट करने में आप बोल सकते हो मज़ा आता है. A lot of people think game testing is a very easy job. कि क्या ही करना है भाई, गेम ही तो खेलना है पूरे दिन. इट्स नॉट दैट. इट इज एब्सोल्युटली नॉट व्हाट यू थिंक. गेम टेस्टर का जॉब इतना डिफिकल्ट है दैट you need to be so aware of what you're doing in the game while you are testing the game that आपकी मिस्टेक पूरे गेम पूरे कंपनी पे भारी पड़ सकती है if you ignore bugs. And I'm sure you know ये चीज़ साइबरपंक के साथ कैसे हुई and how did that impact. Although cyberpunk rose like phoenix again, they came back with a bang and it's one of the best games so far, right? So गेम टेस्टर ना दो एग्जांपल्स बताता हूँ कि उसको क्या क्या करना है. दो चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. नंबर 1 इज you need to play one level thousands of times. मतलब एक लेवल आपको टेस्ट करने के लिए 1000 बार खेलनी पड़ सकती है अगर आप एक गेम टेस्टर हो. अब इमेजिन करो आप लोगों में से जितने लोगों ने GTA वाइस सिटी खेला है अपनी जिंदगी में, तो इमेजिन करो उस टेस्टर का रोल जिसने वाइस सिटी के चॉपर मिशन को खेला है. उसने कितने 1000 बार वो खेला है टू मेक श्योर दैट देयर इज नो बग इन द गेम. सो समटाइम्स यू हैव टू प्ले समथिंग विच यू डोंट लाइक और एंजॉय एट ऑल. गेम्स खेलना अलग है, गेम्स को टेस्ट करना अलग है. गेम्स आप वही खेलते हो जो आपको पसंद है, गेम्स आप वही टेस्ट करते हो जो शायद आपको पसंद ना भी हो. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिग्रेशन टेस्टिंग. हम टेस्टिंग करते हैं ना, तभी फंक्शनल टेस्टिंग होता है, बेसिक टेस्टिंग होता है, देन देयर इज रिग्रेशन टेस्टिंग जहाँ पे हम रैंडमली चीज़ों को स्मैश करते हैं. तो हम कीबोर्ड्स पे रैंडम बटन दबाएंगे, मोबाइल गेम है तो रैंडमली कुछ भी टैप कर देंगे फ़ोन पे टू मेक श्योर कि अगर यूज़र ने ऐसा कुछ किया तो क्या ही बग आ रहा है वो चेक करने के लिए. अब मान लो आपको बग आ गया, एज अ टेस्टर आपने कुछ किया और आपको बग आ गया, तो आप प्रोग्रामर के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, बट मैंने कुछ किया और मुझे ये बग आया. दैट इज नॉट व्हाट यू कैन टेल अ प्रोग्रामर. यू नीड टू टेल हिम द एग्जैक्ट स्टेप्स जो आपने लिए जिसके वजह से आपको वो बग आया. सो अगर आपने ये किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये 19 स्टेप्स किए उसके बाद मुझे ये आया. So yeah, that's difficult, and his job is just documentation and Excel sheets. What are studios really looking for? They are looking for public proof of work, shipping mentality, pipeline understanding, fast feedback loop, and communication. ये चीज़ें अभी ना सिर्फ पोर्टफोलियो लेके कंपनी के पास जाओगे ना तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है. आप कितने एक्टिव हो, आपका पब्लिक प्रूफ, पब्लिकली आपने कुछ चीज़ें डाली है, आप लिंक्डइन पे कितने एक्टिव हो, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आपने कुछ शिप किया है, कर रहे हो कुछ भी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पाइपलाइंस पे कैसी है, ये सब
इम्पॉर्टेंट होता है समझना। सो इसीलिए आपको अपने आप को, आप अगर जो भी चीज देख रहे हो, अपने आप को आप बनाओ। इट्स, आप सिर्फ अपना पोर्टफोलियो मत बनाओ, आप अपने आप को बनाओ। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिल्ड योर प्रेजेंस इन द मार्केट। और ये जो सारी चीजें मैं अभी बोल रहा हूं ना, आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये चीजें रैंडमली आपको कोई कहीं पे मिलेगी नहीं। ये दिस इज मोर ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेन। तो कमिंग बैक टू द फ्रेमवर्क्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि फ्रेमवर्क्स होते हैं, और इसी फ्रेमवर्क्स, यही जो फ्रेमवर्क्स है ना, यही फ्रेमवर्क्स को हम लोगों ने हमारे पूरे एक्सपीरियंस के साथ एट अंडरडॉग्स हम लोगों ने फ्रेमवर्क्स बनाए, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क्स विल हेल्प will help you crack that first opportunity. हम लोगों ने 5 फ्रेमवर्क्स ऐसे बनाए जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को क्लियर करते जाते हो, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि आप एक कंफ्यूज्ड प्रोफाइल से लेके आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कहाँ पे पहुंचना है, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दैट थिंग। सो दीज आर 5 फ्रेमवर्क्स। आई थिंक ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट जस्ट टू रिफ्रेश इट फॉर एवरीवन, ये वो 5 फ्रेमवर्क्स है जो हमने बनाए हुए हैं, एंड दीज आर प्रोप्राइटरी, दीज आर लाइक आवर फ्रेमवर्क्स, एंड देयर इज अ वे दैट वी टीच कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। ब्रीफ बताता हूँ सबके बारे में एक एक चीजें। गेम करियर कंपस, जो रॉन्ग ट्रैक सिंड्रोम है, जहाँ पे आपको नहीं पता आपका डोमेन क्या है, आपको करना क्या है। आप एक गेम डेवलपर तो बनना चाहते हो, पर क्या आप एक डिजाइनर हो, आर्टिस्ट हो, प्रोग्रामर हो, क्या हो, ये आपको नहीं पता। उसको ये जो कंपस है, गेम करियर कंपस, ये सॉल्व करेगा। ये फ्रेमवर्क हमने बनाया हुआ आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नंबर 2 इज अपॉर्चुनिटी लोकेटर। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे डिवाइडेड है, कितने कंपनीज हैं। ये अपॉर्चुनिटी लोकेटर आपको एक एक मैप दिखाएगा जिसमें आपको कंपनीज की सेग्रीगेशन दिखेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ओके, अगर मुझे मुझे जॉब लैंड करना है तो मुझे किस कैटेगरी में करना है, एंड एग्जैक्टली उसके लिए मुझे करना क्या है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। देन देयर इज क्रेडिबिलिटी स्टैक, विच इज, जैसे मैंने कहा, आपके पोर्टफोलियो को लोग बाद में देखेंगे। जब आप मेल करेंगे, उनके मेल बॉक्स में आपका पोर्टफोलियो जाएगा, जब वो चेक करेंगे तब आपका पोर्टफोलियो देखेंगे। बट लिंक्डइन अवेलेबल है आपके, आपका पोर्टफोलियो लोगों तक दिखाने के लिए। सो पब्लिक प्रूफ यानी क्या है कि आप अपने आप को कैसे डाल रहे हो लोगों के सामने ऑन अ डेली बेसिस। देयर इज अ वे टू डू दैट, एंड देर इज अ गोल, देर इज अ क्वांटिटेटिव गोल। मतलब सी, मैंने अगर बोला कि लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करो, तो कुछ भी पोस्ट करना डजंट मेक सेंस। क्या करना है, क्यों करना है, वो पोस्ट किस तक पहुंचना जरूरी है, जो अपॉर्चुनिटी लोकेटर से कनेक्टेड है, ये समझना बहुत जरूरी है, एंड दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स यू डू दैट। फर्स्ट डोर मेथड इज बेसिकली हाउ डू यू रियली अप्रोच दोस स्टूडियोज, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, ये सिखाया जाता है इस फ्रेमवर्क में। एंड देन देयर इज द आइडेंटिटी प्लेबुक, इज बेसिकली यू आर बेसिकली बिल्डिंग योर ओन प्रोफेशनल ब्रांड। मैं 2 चीजें इस सेशन में बता देता हूं आपको, बिकॉज वी हैव टाइम, विल शो दैट टू यू। नंबर 1 इज गेम करियर कंपस, आइडेंटिफाइंग योर कोर स्किल्स। बहुत ही अमेजिंग सी चीज बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, सो उसको ठीक से देखना, बिकॉज दिस इज अगेन समथिंग
जो मैं आपको लाइव करके बताऊंगा. ओके, आपके सामने व्हाट यू सी इज नथिंग बट द गेम करियर कंपास. फाइंड योर ट्रैक. बेसिकली इसमें वी हैव मेड श्योर बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वी हैव मेड श्योर देर आर ओनली 12 क्वेश्चंस. 12 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका डोमेन क्या है. I'll show you right here, right in front of you. I'll say my name is Vaibhav and I'll start the compass. Okay, your natural lens. You sit down to play a new game for the first time. What? अब मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ, मतलब इसको एक केस स्टडी की तरह मानते हैं. 18 साल का वैभव ये सोच रहा है कि उसे करना क्या है. उसे गेम डेवलपर बनना है, पर उसे करना क्या है एग्जैक्टली उसे नहीं पता. क्या वो गेम डिज़ाइनर है, क्या वो गेम आर्टिस्ट है, क्या वो गेम प्रोग्रामर है, क्या वो गेम टेस्टर है, उसे नहीं पता. क्या उसमें बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ है, क्या उसमें बिजनेस बनाने की कैपेसिटी है, क्या उसमें कोई इनिशिएटिव्स करने की इच्छा है. आई डोंट नो. 18 साल का मैं अगर मैं इस पेज पे लैंड करता हूँ, इन 12 क्वेश्चंस के बाद मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू. You sit down to play a new game for the first time. What is the first thing you notice? How the interface is laid out and whether it feels intuitive. The design and flow pulls my attention first. Whether the core mechanic is tight and well coded. मैं प्रोग्रामर नहीं, मेरे को एक्चुअली नहीं है इंटरेस्ट कोर मैकेनिक्स प्रोग्रामिंग में. ठीक है. हाउ मेनी प्लेयर्स इट हैज़ एंड वेदर इट इज़ मेकिंग मनी. वेदर देयर इज अ कम्युनिटी अराउंड इट एंड हाउ एक्टिव दे आर. मुझे ऐसा लगता है इन चारों क्वेश्चन से मेरे इंस्टेंटली दिमाग में ये आएगा, हाउ द इंटरफेस इज लेड आउट एंड वेदर इट फील्स इंटुइटिव. बिकॉज मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गेम डिज़ाइनर बन सकता हूँ. 18 साल का वैभव ये सोच रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई आई चोज दिस. नेक्स्ट, यू हैव अ फ्री वीकेंड एंड नो ऑब्लिगेशंस. व्हाट डू यू फाइंड योरसेल्फ डूइंग. टिंकरिंग, बिल्डिंग समथिंग न्यू इवन इफ इट नेवर शिप्स. आई डोंट थिंक सो. मैं ये नहीं करता. मैं कोडर नहीं हूँ, मैं नहीं बिल्ड करूँगा. कंज्यूमिंग एंड क्रिटिकिंग, एनालाइजिंग गेम्स, फिल्म्स और प्रोडक्ट्स. दिस इज समथिंग दैट आई वुड डू. रीडिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और कंपनीज, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, एन इवेंट, अ ग्रुप, अ कॉन्वर्जेशन. Maybe I can do both these things. These are like my two things that I would do on a weekend. Which working environment brings out the best in you? Deep solo focus, headphones on, building for hours. I don't think so. ये मेरे लिए नहीं है. Collaborative but creative, feedback loops and iterations, strategic discussions, room where decisions get made. ये मेरे टाइप का है. Community spaces, calls, ये मैं नहीं कर सकता. Collaborative but I'll stick to this because ये you're scrolling late at night and something genuinely catches your attention. What is it? A breakdown of how a game mechanic or engine feature works. I don't think so. A design critic or UX teardown of a popular product. I don't think so. A funding round, acquisition or market analysis in gaming. This is very interesting. This I think I love this. I'll do this. You are playing a game and something feels genuinely broken or frustrating. What is your instinct? I wonder what went wrong technically and how to fix it. I immediately see how I would redesign that moment. 100% this is what I will think. I think about what this means for the game's review and revenue. I go find what other players are saying about it. I mean, I'll choose this only. If you are honest about what actually engaged you at school, which subject felt most natural? Math, physics, computer science, or anything? Nahi. Art, design, literature, yes, this is something that I was very good at. Economics, business, nahi. Social science, nahi. I shipped a game or tool that thousands of people use. Close your eyes. 5 years from now, which version of yourself feels most real? I worked on something that won recognition for its design or experience. I would love this. I built or scaled a gaming business that actually makes money. Of course, this. I helped hundreds of people get into gaming. Or ये भी है मेरा, but by the way, I'll just choose these two.
Someone in the Indian gaming industry just praised you publicly. What did they say? The technical work you built is genuinely impressive. नहीं मैं करता नहीं है. The experience you designed just feels different, better. You spotted this market opportunity before. No, I think this is something because of you I found. This is also something that I would love. You need to convince someone of an idea they do not yet understand. How do you do it? I build a quick demo or prototype. I sketch a diagram, map a flow, or draw the experience. I do this. I use data examples and a logical framework. I also do this. I tell a story or find an analogy that makes it personal. Now, no preparation, no training. Which of these could you do well today? Figure out how to make a simple game mechanic. Write a clear, specific critique of why a game design fails. Research and summarize the business model of an Indian gaming company. Okay, again, I'll choose these two. When you think about building a career in Indian gaming, which fear genuinely sits with you? I'm not technical enough. I cannot code or use game engine. मुझे नहीं आता ये. My creative work might not be good enough to be taken seriously. This is something. I could build something great and will still not make money. This is okay. I will always be behind the scenes and I'm never behind the scenes, by the way. Last question, which of these feels most true about you right now? I want to make games, but I have no idea where to start technically. I love how games feel and look, but never thought of that as a skill. I see a huge opportunity in Indian gaming but I am not a developer or a designer. No, I am this. All right, look at this. Take a good look at this. गाइज मेरे 18 साल के वैभव को आंसर मिला है कि तू डिजाइनर है. नाउ अगेन वन मोर थिंग टू ऐड इज डिजाइनर अगेन इज एन अम्ब्रेला. इसके नीचे मैंने गेम डिजाइन और गेम आर्ट ये भी अलग से कंपास बनाए हुए हैं. वंस यू गेट अ डिजाइनर यू टेक दैट, देन यू अंडरस्टैंड वेदर यू आर अ गेम डिजाइनर और एन आर्टिस्ट. ठीक है, बट दिस इज वॉट वी हैव राइट नाउ. द डिजाइनर, द बिल्डर, द बिजनेस बिल्डर. ओके, सो मेरा प्राइमरी था ये द डिजाइनर. ठीक है, एंड देन द बिजनेस बिल्डर. द बिजनेस बिल्डर इज बेसिकली, वन सेकेंड गाइज, ओके द बिजनेस बिल्डर ये आया बिकॉज इट सेज दैट मेरे में बिजनेस बिल्डिंग एबिलिटी है, एंड विच इज वॉट टर्नड आउट टू बी ट्रू बिकॉज आई एम रनिंग अ कंपनी राइट नाउ. So yeah, there is more details into it, but it gave me my answer. So let's just give me like 1 second, guys. Just 1 second, please. Just 1 second.
Oh my god, 1 second, guys, 1 second. Okay, done. All right, we have it now. Okay, coming back to the presentation, guys. So this is framework first, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये फर्स्ट फ्रेमवर्क है. ये फ्रेमवर्क जब आप लोगे खुद से, यू विल गेट टू नो कि आपका डोमेन क्या है, और फिर once you're clear on that, then you go into that next phases of okay, अगर मैं गेम डिजाइनर हूँ तो मुझे क्या 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 करना है, ये स्टेप्स है, ये लेने हैं to become a game designer. If I'm a game programmer, there is a different roadmap. If I'm a game artist, there is a different roadmap. तो ये सारी चीजें connected हैं. That was framework number 2. This is the second frameworks locator, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को. जो सेकंड जो फ्रेमवर्क हमने बोला, किधर गया ये दो, द नंबर 2, द अपॉर्चुनिटी लोकेटर. डिस्कवर विच ऑफ इंडियाज 3 इंडस्ट्री लेयर्स होल्ड योर फास्टेस्ट एंड मोस्ट रियलिस्टिक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. ये जो है ना, दिस इज बेसिकली अ स्नैपशॉट ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज इन इंडिया. और सरप्राइज होंगे आप कि ये पिरामिड स्ट्रक्चर में है. पिरामिड स्ट्रक्चर में है, इसका मतलब क्या है? जो लेयर 1 है, जो डायरेक्ट विजिबल इंडस्ट्री है, जाने के अगर मैं आपको कुछ 5 गेमिंग कंपनीज के नाम डालने बोलूं चैट पे, let's just say we have 5 gaming companies. Because they are gaming companies, directly work on games, they fall into that first layer. Number 2 is invisible layer, यानी मिड लेवल स्टूडियोज है जिनके नाम आपने सुने भी नहीं है. एंड देन द थर्ड इज एडजेसेंट लेयर, विच इज अ ह्यूज लेयर. ये गेमिंग कंपनीज बिल्कुल भी नहीं है. ये कंपनीज ऐसे है जैसे से रेजर पे, जोमैटो, स्विगी, इन सारी कंपनीज में ये सारे प्रोफाइल्स अवेलेबल है. गेम डिज़ाइन, गेम आर्ट, गेम प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपर, ऑल ऑफ दैट. तो इसको है ना डिटेल में फ्रेमवर्क नंबर 2 में ब्रेक डाउन किया है, और इंडिया के 200-250 कंपनीज की लिस्ट है सेग्रीगेटेड विथ दीज लेयर्स. और ये सब हम इस वेबिनार में नहीं कर रहे हैं, because all of that is going in, because we did like first framework in this. We usually do all the frameworks in cohort. अब ये cohort क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. We have already done cohort number 1 last month. Okay, and now we are doing cohort number 2. कोहोर्ट 1 जो था ना, वो हम लोगों ने फुल मंथ किया हुआ है. इट वाज अ 4-week प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया फर्स्ट कोहोर्ट, एंड इट वाज काइंड ऑफ वेरी वेरी इन डिटेल एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. 4 वीक में हर संडे 2 घंटे हम लोगों ने वर्क सेशन किए. एंड वो बड़ा कोर्स था, वो बहुत ही बड़ा कोहोर्ट था, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल जॉइन दैट कोहोर्ट. व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज, देयर इज दिस, ये पुराना ही है 4 weeks. ओके, व्हाट वी आर डूइंग नाउ, कोहोर्ट नंबर 2, वी आर ब्रिंगिंग कोहोर्ट नंबर 2.
जिसमें अभी मैंने जो फ्रेमवर्क्स बताए ये सारे फ्रेमवर्क्स का एक्सेस, उसके साथ उसकी डिटेलिंग, उसके साथ हैंड होल्डिंग लाइव सेशंस पे होने वाली है. सो व्हाट वी डिड, वो जो 1 मंथ का जो 4 सेशंस थे उसको हमने 3 सेशंस में क्रिस्प किया हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है. एंड वी आर डूइंग कोहोर्ट नंबर 2 इन 1 वीक. संडे स्टार्ट होगा, 3 सेशंस करेंगे, संडे, वेनेसडे and next Sunday. In 1 week, we finish all the 3 sessions, 2 घंटे के. So we do 2 hours on Sunday, 11 to 1. We do 2 hours on Wednesday in the evening, and we do the third session, which is 2 hours on the next Sunday. ये 3 सेशंस में हम ये पूरी चीज़ों को कवर करेंगे. लिटरली हैंड होल्ड करके लाइव सेशन होगा जूम पे for all the people who will actually join this cohort, and we'll take you through that entire journey and that roadmap कि आपको ये कैसे करना है, how do you really crack that opportunity in the gaming industry. What we are doing, what we are giving away in this entire thing is officially now we are giving underDOGS certificate on this. That's number one. There is a portfolio template that we have created which will be again given to you so that you can create your own portfolios. आप लोगों ने देखा है कि मैंने कितने लाइव सेशन किए हैं पोर्टफोलियो को लेके. Then the third is the GDD template, and the last is there's a comprehensive list of 200 gaming companies in India. So we are doing that. Now, one thing that we are doing which is a little different from what we did earlier. Cohort 1 जो था वो बड़ा भी था और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी था. That cohort was around 12,000 rupees, and it was so good. In fact, we had fun doing it. ये थोड़ा छोटा है, but at the same time we didn't plan for cohort 2 at all. हमने cohort 2 प्लान नहीं किया था. हमारा पूरा फोकस cohort 1 पे ही था. But because that cohort 1 gave us so much to work around for cohort 2, we actually made sure that more people might get an opportunity learning this entire thing. So we crisped it down, and we also priced it a little less than what we had earlier. But the entire credit goes to the first cohort also, because we also learned a lot what has to be done to make it crisper and to offer a good pricing to people, right? So I would just request if Vinayak is just watching this, if you can put the link of the cohort in the chat, I can just pin it down. Okay, we are open for Q&A, but at the same time I'll just put a link of the cohort right here in the chat box so that you guys can check that out. Alright, मैंने पिन कर दी है link. So we had this entire thing for 12,000, and it was a big course. But this is a smaller version of this entire cohort that we are doing in a 1 week, and this is priced at only 6,000 rupees. I know a lot of people came to us
with um, with the request to join the cohort 1, but we couldn't do that at that time. So we're doing it again now. Cohort 2 is happening between 19th July to 25th July. 3 sessions, 2 hours each, and we'll help you through this entire roadmap of how to get into that industry. Uh, we can start the Q&A. Let me just pick few questions here. One more doubt: is there a good future in solo duo game developer? By the way, recently I've started learning. It all depends on what games you make. If your game is bad, there's no future. Have you heard news of the headphones outsource studio? Headhoppers outsource studio. No. I want to become a concept artist. I'm doing game art. But after doing game art of the games, I want to shift in game design. Any advice for me? You can't really, there is no shifting there. These are like two different domains. You need to make sure shift in game design. I think the best way to shift, to move from one domain to another, is in the same company. If you are doing it in the same company, there is way, like there is a better chance. How many wishlists does Mukti have so far? Hello sir, I want to start my own game studio and I want to ask you how to look for investors to invest on my studio. I have every knowledge how to run studio, please tell. ऐसा थोड़ी है, एक चैट में थोड़ी होता है ये. Sir, one more doubt: is there a good future in solo? But I don't know whether there's something. I want to start my own game studio and I want to ask you, look, अरे यार. Advice for indies developers. रोड मैप वीडियो जाके चेक कर ले अनिश. मैंने डाला हुआ है इंडी डेवलपर्स के लिए रोड मैप. Hello sir, I just completed my class 12 and gonna pursue BSc in animation VFX from Sharda. What are your opinions on it? I have interest in game art specifically. If you are clear, just go for it because there is good future. I'm beginner student, want to learn game programming in Unreal Engine from last few weeks. I'm confused regarding the Unreal Engine updates as they removing blueprints and I don't know what to start now. Blueprints was never meant to help you become a game programmer, honestly. वो तो टाइम पास था. वो तो लोगों ने उस पर गेम्स बनाए हुए हैं, लेकिन कम ऑन, you can't do everything on blueprints. I'm a student. Okay, I'm beginner learn. Hey, Vaibhav, I'm a student with 6 months internship experience as a game programmer. Can you share a few points to someone like me who is interested in the startup rather than a job route? First, you need to build clients, build network who can actually give you work. If you're looking at B2B, if you're looking at B2C, just continue your job and make a game as a side hustle. If that works, go full time, otherwise don't. Suggest content to consume as a art director: movies, games, watch world cinema, watch Malayalam cinema as well, and some other expert environment directors to train under in India. Blastipede. Is there a opportunity in India concept art? I can
Is there opportunities in India for concept artists? Can I learn concept art from online course because I can't afford institute fees? Yeah, you can. There is scope in the sense you will not find direct jobs as a concept artist a lot in India. बहुत rare opportunities है, but you can make a lot of money online because you can work with studios like Naughty Dog also, becoming a concept artist. But your art needs to be really good. So, what are your opinions regarding new games shown in GDC? Will Indian devs companies be able to eventually reach the levels like that of giants like Activision and Rockstar? Of course, we will, but at least 2 years from now. What about 3D game VFX artists? Is there any scope of it? Not a lot in terms of opportunities. इंडिया में स्पेशलाइजेशन नहीं है. इफ यू आर अ programmer, technical artist basically, who can do VFX, you have a great opportunity there. Sir, then when to get knowledge for the investors? Please tell. If you are, see, you need to understand, तेरा मेथड ही गलत है. अगर तुझे बिजनेस करना है वो भी इन्वेस्टर के पैसे से, your method is only wrong. How long can you survive with an investor money? Your model needs to make money for yourself. Investors' money help you grow. First, figure out a model which is monetizable. Start making at least 1 rupee from that model. Then every investor will be interested in investing in you. ये क्या आंसर था सर? How does that help me? और क्या बोलूँ तुझको? Suggest content to consume as an art director. I'm telling you, there is a lot of content that you should consume. Look at how these, because you're talking about being an art director. Look at how things are done in already successful projects. That's how you learn. Observe them. सिर्फ लोगों की प्रवचन सुन के कुछ नहीं होता. You'll go on GDC Vault and see people giving presentations. Nothing's going to help you for long. For you, it needs to be observation, more of observation and consuming content. I'm currently transitioning into being a 3D artist after being a game programmer, but how can I understand the current market status of jobs for 3D artists? I already gave you the numbers in this presentation itself. Agar you join late, then go back and see the numbers. And if you are really interested in building that career and how to get into that industry, this cohort is what is going to help you. Hello sir, I'm in 3rd year doing B design bachelor BDs. क्या है ये? In game design, I'm searching for job and internship, but all openings require 2 to 3 years experience minimum. What to do? What can I tell you with this? That is the reason I have built this cohort. If you're serious enough, join this. I'm just 16 and I can't afford paid courses. Is YouTube enough for learning? 100%. 100%. Just learn from YouTube. If you are working on Unity, go and check out what Unity Learn is. It's also free. What about 3D game? Head Upper Studio is a AAA game outsourced studio in Lucknow, Aliganj, which caught fire in the studio last. Oh yeah. Got it. I am game developer, to be precise. I am lead game programmer at Physics Wala. See, this is level 3 company, huge pyramid, bottom layer, which is not a direct gaming company, but someone as a lead game programmer has commented here, making all kinds of educational games. Now I'm aiming to get a proper AAA games making industry suggest path. Brother, you're doing good. This code is not just for beginners, it's for everybody who wants to transition into things, because there is a roadmap for everything. I'm into graphics programming for past few months, and I have made a basic OpenGL renderer, but it's hard to find a job as a graphics fresher, especially in games. Thoughts on those situations? It is very easy. It's not difficult. It is very, very, very easy. You're asking me the question
that see, the answer to every question in this chat, that how to find a job or how to get a job or I'm not getting a job, this code is the answer to that, because it gives you a roadmap and a clear understanding of what are these mistakes that you all are doing, because of which you're not getting that opportunity, and how do you make, how do you do that, how do you actually build that path for yourself so that people immediately pick you up in that opportunity. It is true, I'm telling you, it's not a joke. I have completed my 12th grade this year. I want to do BSc in game art, but my parents want me to do engineering with game development. They feel they fear that I can't do pencil drawing, which is not required. Game art, but my parents is engineering with game development. Engineering with game development. Game, you don't need skills of pencil art, pencil drawing to become a game artist. Please explain to them. That's the simple thing I can I can suggest or recommend. Free assets. Asset store पे go and search for assets, filter the free ones and get those assets. बट वही है ना यार, फ्री में तुझे तुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा. Sir, I have an important question. My age is 21. Before this, I used to do 3D animation freelance. Now I want to make my own game in Unreal, and I know Unreal a little. So before starting, I was thinking of playing unlimited web series and games for 3 months, making notes for inspiration. Good, do that. I do that very often. मैं मुक्ति के लिए भी मैंने ऐसी मूवीज देखी है जो तुमने सुनी भी नहीं है. सर, फ्रेमबॉक्स भोपाल का गेम डिज़ाइन का कोर्स ले लूँ क्या? गेम डिज़ाइन मुझे नहीं पता भाई, यहाँ पे वहाँ पे क्या सिखाते हैं. मुझे ये पता है कि मेरे कोर्स में क्या सिखाते हैं. मैंने गेम डिज़ाइन का फंडामेंटल कोर्स यूडेमी पे है, वेरी चीप वन. जस्ट गो एंड बाय दैट इफ़ यू वांट, बिकॉज ये भोपाल का क्या है मुझे नहीं पता. आई हैव नॉट सीन देयर करिकुलम, सो आई कांट रिकमेंड. सर, एनी टिप्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स? एनी बुक्स एंड प्रैक्टिस मेथड्स? जितना कंज्यूम करेगा उतना सीखेगा. रीड एंड ऑब्जर्व, रीड, ट्राई, कम्युनिकेट विद पीपल बेटर. लाइक आई नो पीपल शाय अवे अगर इंग्लिश में बात करना है. बहुत लोग लाइक विल you, unless and until you do it, you will not improve it. Sir, thanks for the advice, glad to attend this. Yes. Any insights on game UI UX? How does that work in the industry? By the way, great content, sir. Game UI UX, there is no separate artist for that. It's basically done by 2D artists in game development industry. So there is no separate UI UX designer for this. The 2D artist usually does it. There are some companies who actually hire UI UX separately. ऐसा नहीं है कि opportunity नहीं है, but कम है. Can you guide me a brief guide how to start making the portfolio as a game designer? Join the cohort and I'll tell you. That's what we do in the cohort. So there are no jobs for freshers, concept artists. So I should start to side by side as 3D artist or illustrator like other jobs to support my dream to become concept artist. Am I right? Nobody will stop you from doing concept art. So keep doing that. But at the end of the day, you'll need job, right? So you're talking sense. You should do that. But तुझे मिल जाएगा opportunity if you play the cards right.
सर एक दफ़ा कोर्स डिटेल्स एंड प्राइस बता दे प्लीज़. सो कोर्स बेसिकली दिस एंटायर थिंग राइट, इसमें ना अभी ये जो बता रहा हूँ मैं, ये 5 फ्रेमवर्क्स के ऊपर है आप जिसे आपको कुछ नहीं पता. यू गो इन टू दैट, हम आई विल एक्सप्लेन यू द करियर कंपस इन विच यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारा डोमेन क्या है. फिर तुम्हें पता चलेगा अपॉर्चुनिटी लोकेटर में कितनी कंपनीज है. और अगर मैं गेम डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, अगर मैं गेम आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सी कंपनीज को टारगेट करना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ द मैप दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड. उसके बाद क्रेडिबिलिटी स्टैक इज़ योर पब्लिक प्रूफ. यानी मैंने चूज़ किया मैं गेम आर्टिस्ट हूँ और मुझे शायद लक्ष्य डिजिटल में जाना है, जॉब करना है, मुझे चाहिए वो जॉब. तो मैं लिंक्डइन पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं. आई स्टार्ट पुटिंग आउट कंटेंट ऑन लिंक्डइन दैट कनेक्ट्स वेरी वेल विथ लक्ष्य डिजिटल्स वर्क. मतलब लक्ष्य डिजिटल आज जो काम कर रहा है, थोड़ा फेमिलियरिटी होना चाहिए मेरे पोस्ट में और उनमें. दैट इज हाउ पीपल विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू, योर स्किल्स, and then there is using that you start reaching out to people directly in that studios so that you can land an opportunity. See, that is, and now if you ask me, बहुत simple steps होते हैं ये, कोई rocket science नहीं है. But the problem is people don't know, right? So in these 3 sessions we will be taking you from this to, at the end of the day, making a good portfolio. A good portfolio will help you build that, explain and build that, and the way to reach to the studios. We will talk about all the mistakes that people are doing, जो जिसके वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही है. वो कोई मिस्टेक्स आपको बताएगा नहीं ऐसे कि मैं अगर कंपनी का फाउंडर हूँ तो मैं किन लोगों के रेज्यूमे रिजेक्ट कर रहा हूँ, किन लोगों के पोर्टफोलियोज रिजेक्ट कर रहा हूँ सीधे सीधे. अगर मैंने लास्ट मंथ एक गेम आर्टिस्ट की पोस्ट डाली थी ऑन लिंक्डइन. 700 पीपल अप्लाइड टू दैट पोस्ट, वन पोस्ट, 700 पीपल. और हमने 2 दिन में सारों को फिल्टर आउट कर दिया बिकॉज उनमें से 95% जो रेज्यूमेज और पोर्टफोलियो थे वो 10 तरीके के मिस्टेक्स कर रहे थे जो हम पकड़ लेते हैं एंड देन वी रिजेक्ट द पोर्टफोलियो बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो मिस्टेक करने वाला बंदा वुड नॉट बी अ गुड कॉल फॉर द कंपनी. तो ये चीज़ें है ना, कोई बताएगा नहीं. वी टॉक अबाउट डोज इन दिस एंटायर थिंग. दिस एंटायर थिंग विल रन फॉर 1 वीक एंड इट विल कॉस्ट यू 6,000 रुपीज़. लिंक मैंने यहाँ पे डाली हुई है, गो चेक दैट आउट. It's a razor pay thing. You just click on it. If you're interested, register yourself. We will be arranging a WhatsApp group. All of you who are interested in this will be put in that, and then we do it between 19th July to 25th July. That is the entire thing. Can you suggest us top 3 movies series? यार आह मैं तो रैंडम मलयालम मूवीज़ देखता हूँ, मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ, फ्रेंच मूवीज़ देखता हूँ. काफ़ी सारे ऐसे मूवीज़ जो जो बहुत ही नीश है. हाउ डज एनीवन who wants to transition to game design from any other stream build a portfolio or build experience in game design if they do not have the team that could make the design come alive? Very simple, very good question monkey man, and very simple answer. गेम डिज़ाइनर से क्या एक्सपेक्टेड है कि वो लिख सकता है, वो सोच सकता है और वो कम्युनिकेट कर सकता है. तुम्हारे पोर्टफोलियो में you just need to showcase those skills. How do you show that? Your portfolio has to have 5 to 6 good concepts that you yourself created, just written concepts. You don't need to make them. You're not a programmer. You need to write those things, and
use Photoshop to create mock screens of what you've thought. That's it. That's it. That is it. Then uske niche, what you do is you dissect one popular game. जैसे मारियो को उठाया, पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला कि why do you think as a game designer Mario works? Why doesn't it? What are the changes that you as a game designer could have done? All of those things जो you can talk about. अब इसको देख के ना your skills, your understanding of the fundamentals of game design उठ के आ जाती है. You're not a programmer. You don't need a demo. Sir, I want to become a good developer. I have also learned game engines like Unreal Game Engine, Unreal. I'm stuck in this place. Join the cohort, brother. That is where we will. Oh, there is lol. Okay, guys, we're getting some good response on this. We're already getting some registrations on this cohort. I just checked. We already have few registrations coming in. It's a limited seats cohort, so if you are really interested, it's just 8 days away, 8-10 days away. So do register if you are really interested, because I will be personally taking this entire course, 3 sessions, 2 hours, on a Zoom call, video call, where we can talk. We can solve your problems. Do Indian game studios hire remote part-time programmers? I am a student, so most companies hesitate to hire me full-time even though I have flexible attendance internship experience. Nobody will hire you, sir. Nobody will do that. People need full-time people. There is a lot of dependency that happens, and it is not ideal for anyone to hire students who are also learning on a full-time role. So I'm new to the channel and I'm really glad I have finally figured out what my core skill is. Until now I'm trying to do design, code and everything, and I was so confused. Very much thanks, sir. Definitely joining the core too. Absolutely join it, brother. There is more. ये सिर्फ टॉप लाइन चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन की है ये सेशन में. When those 3 sessions happen, you will be a completely different, confident person by the end of the cohort. If I want to become a 3D character designer, please share a roadmap video. Wow, like this is great. Sir, I have done 12 this year, so is it good to do game dev in India? Absolutely, brother. I'm 17 years in this industry. If it was not good, I wouldn't have been here. Thoughts on the simulation and AR XR companies and their tools are similar to game development. Do you see these things same or they are different as an no, so these are same only. See, this is what I'm talking about. These invisible industry and adjacent layers, right? ये पिरामिड ऐसा है ना कि ये ह्यूज अपॉर्चुनिटीज नीचे है. क्या होता है, बहुत लोग कहाँ पे स्टक है मैं बताता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि लोग ट्राई किए जा रहे इन द फर्स्ट लेयर, जिधर गेमिंग कंपनीज है. फर्स्ट लेयर में गेमिंग कंपनीज है, सबको मालूम है. नाम बोल, अगर मैं पूछूंगा नाम बताओ, तो there are only names like say Laksh Digital, Nazara, what is it, Nodding Heads, Raji, underDOGS. आपको like these are the company names that you know, which are gaming companies. Crafton. अब हर किसी को अगर यही कंपनीज पता है तो हर कोई यहीं पे अप्लाई करने वाला है, एंड दैट इज व्हाई यू सी हाई कंपटीशन
your portfolio needs to be super strong to get an entry into these kind of companies. But when you talk about the invisible industry and the adjacent industry, in जिधर ऊपर तुम्हारे पास 20 कंपनीज है, नीचे के लेयर में 200 कंपनीज है, तो इसीलिए एंट्री करना काफी इजी है. दीज आर कंपनीज विच आर एडजेसेंट, यानी ये डायरेक्ट गेमिंग कंपनीज नहीं है, लेकिन ये गेमिफिकेशन कर रहे हैं. जैसे समवन स्पोक अबाउट वर्किंग इन अ कंपनी इन फिजिक्स वाला who are making games for students, that's an adjacent industry. वहां पे एंट्री करना कितना आसान है. Now once you get experience in these companies, then you scale up and go to the layer 1, then you get great opportunities right there. Game designer or developer, what will be the best career in India? The one which you are good at will be the best for you. Hello sir, currently I am pursuing 3D character creation. Okay, mostly inspired by anime style games, but I am only doing anime style character. I am doing something wrong. Of course you are doing something wrong, brother. You इंडिया में ना स्पेशलाइजेशन की कोई जगह नहीं है फिलहाल. इफ यू आर अ 3D आर्टिस्ट, यू शुड नो 3D आर्ट in different styles. You should be able to work on 3D Max, Maya, Blender. There is nothing like a weapon artist. I mean, there is, but very few opportunities like that. पर अगर आप जनरलिस्ट हो, आप सब कर सकते हो, आपके लिए सही है. So make sure you know a lot of things. I just joined the cohort and what's the next step, sir? I didn't receive any. Oh, thank you. We already have the registrations and a few inquiries also. 100 problems, one solution, join the cohort. Correct. Sir, in general, I learned Python. Will it help me in game development? Or do I have to do something specific in Python regarding game development? I think it's better you move to C++. At least Python has given you the base, but because the engines use a specific language, you have to go there. Hi sir, I have taken admission in Backstage Pass Institute of Gaming course in Computer Science and Development. Please give some advice to make strong portfolio in future. I can give that advice one-on-one in the cohort. But otherwise, if you really need free advice, just go and check out the live sessions that I've done, which are portfolio review sessions, जो already मैंने किए हैं. Who will guide for character art in your course, as you yourself are game designer, not an individual artist? This course is not the technical skills, where nobody is going to show you how to make a character art. What this is about, how to build your portfolio, how to get that opportunity. If you're looking at a course which can help you make good character art, this is not a course for you. As I have taken admission in Backstage, okay, please give some advice. I have seen your video in which you suggested game dev from Mumbai. So is that still recommended? Game dev from Mumbai. So do you will discuss career roadmap of concept art in your following? Yes, 100% I will be. 100% I will be. It is for all the domains. It is for all the domains. See, problem तुम लोग समझो. Your problem is not your skill. Is the top layer. मतलब तुम डिजाइनर हो, तुम्हें डिजाइन कितना आता है, तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हें आर्ट कितना आता है, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो, कॉन्सेप्ट आर्ट कितना आता है, कैरेक्टर आर्ट, ये स्किल तो तुम्हारे पे है, ये तुम पे छोड़ा है, ये तुमको पॉलिश करने हैं. पर वो स्किल्स होते हुए भी तुम्हें जॉब क्यों नहीं लग रही है, तुम्हें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है? ये बड़े प्रॉब्लम्स है.
And this cohort is basically solving those bigger problems for you so that you land in that good opportunity. Is 35 lakhs plus international masters in computer graphics worth it? I mean, is there a good ROI or it's overkill? I would say it's just too much. It's too much. I don't think it's necessary. Again, I could be wrong, but I don't think it is necessary. It's just waste of money. It's just waste of money. Guys, we have last few minutes before we wrap this up. We're receiving good registrations on this cohort. If you want to be a part of it, think about it and just check the link. I will be sharing this on my social handles again from tomorrow. So make sure you don't miss this. Because it's just a 1 week course, 1 week cohort, and it'll help you from being a beginner to actually being very confident and having a roadmap, a clear roadmap, a path how to get into that industry and that job role that you are looking for. Is 3 LPA Unity role good for first job or should negotiate for fund? I would say it's good. You need to understand. See, the question has the answer. You need to understand. See, first job is not about earning. First job is all about learning. You just need to focus on how much are you learning from that. If 3 LPA, okay, I'll just give you an example. You will have your own answer. Some earth. I want the answer right there in this chat right now. And this is a situation, okay? अभी because you're saying कि मैं negotiate करूँ कि नहीं 4 or 5 LPA पे, imagine a situation where Rockstar Games or underDOGS has told you that they are giving you a job, but they are giving you 2 LPA. And then there is a rummy company, a rummy gaming company who is making rummy games and they're giving you 5 lakhs per annum. What would you join? And there is no negotiation chance. What would you join? Please do more live streams in future. There are a lot of confusion in my mind, and after you live stream, I feel so much confident about my career. Graphy, just join this cohort. This will be a game changer for you. I'm telling you. There is a good. We did cohort 1, and again, not blowing our own trumpet, but we did cohort 1, and we will be putting out the testimonials from the first cohort of people who joined it, and it's 100% positive. Not even one has complaints on it. It's 100% positive. Yeah, I would take underDOG anytime. So you have the answer. It's about learning. It's not about earning. Don't go into these negotiations at this stage. If the opportunity is good, take it. You might sound greedy, people, but I mean, it's not about hurting people's ego. Like, you can go and negotiate to 4 and 5 lakhs or even 10 lakhs if you want. And
it's not about hurting people's ego. It is about people judging you basis your zeal and passion towards what you want in your life, and it gives a clear sense of of work versus money. So people are experienced enough to understand the between the lines. So I also want to start my studio. Can I get a clarification about this in court? 100%. How to manage the stress levels of running a studio? What can I say? Be happy, chill, everything works out. Yeah, I would take Naughty Dog anytime. Okay. Thoughts on those unpaid internship thing and those online debate about them? It's the same thing that I just said. I don't think, and I can go on record and tell this. I don't think unpaid internships are wrong. It is, nobody's asking you, nobody's forcing you to join those. There is a win for like I just gave you an example that Naughty Dog's 2 lakhs LPA is also fine with you because that's how it works, right? People have built their credibilities enough that they offer more than the money that you are looking at. And that's why unpaid internships in the right opportunities should be gold for anybody. If I was, and I had already done this in my career, so I don't think it's wrong. Hey, Vaibhav, how is the job market in India for game artists? I saw openings in Super Gaming Pune of 3D artists, but not in other gaming studios. The job market is big. It's very big, and the problem is, see, again, this is the thing, right? You're saying that you didn't find in other gaming studios because you're looking at the top layer. You're not looking at the two layers beyond that. There are bigger opportunities there, bigger money coming from there, which is what we are trying to help with. Can you please make a video on IP? How to get things registered? How much does it cost? सभी कुछ सब कुछ डाल दूँ तो कैसे चलेगा? Guys, I think we should just wrap this up now. We've already spent like 2.5 hours in this. The cohort has limited seats, so without wasting any time, if you are interested in getting that one-on-one clear path on the roadmap in the cohort, just join it. It's very useful. Before going, just hit the like button on the video, on the YouTube video that you're watching. It helps. It helps. Yeah. Cool. Thank you, guys. Thank you for watching me. And just wanted to bring this again because we are starting this in next 8-10 days. I don't want people to miss out on an opportunity that could change their lives, because this is a game changer, right? So if you are interested, ping me on Instagram, ping me on LinkedIn. I'm available to reach out, and I can explain you more on this cohort. It's only $6,000, so do check it out. To get more understanding on this, there's another thing. Just check out this website. It has all the details of the cohort. It has all the details of the cohort, so just check that out. But anyway, this is like, it's high time. Cool, guys. Thanks a lot. I'll see you guys in the cohort. I don't think I'll be doing a live stream before the cohort, so I'll see you there if you're joining, and keep watching the videos. Good videos are coming soon. Thank you.
बाय बाय।